I didn't hear loud enough. Good morning. Good morning. Thank you so much. I recall myself to 1970, 1969, 1968, up to 1975. One thing that the thread that was common, जो एक कड़ी हम हर रोज करते थे, वो थी थॉट फॉर द डे. तो जैसे असमत मैम ने कहा था कि हम असेंबली कंडक्ट कर रहे हैं आपके लिए, वैसे आज की थॉट ऑफ द डे विल बी गिवन बाय आवर टायर्ड, रिटायर्ड, ओल्ड. हम सब बुढ़े हो गए हैं, but we are still young at heart because we have come to school. Oh, the guys are saying we are not old yet. Thank you guys, just reminding me. Done. May I request Viplav to give the thought for the day. Viplav, stage is all yours. What is today? 1st of February. You all have chewing gums? But today is the chewing gum day. Yeah. And another thing is that today is the Indian Coast Guard Day. For you, now the thing is that you all will be knowing thought of the day for today. The key to our future is not knowledge, but the constant pursuit of learning. Never stop asking questions and challenging yourself to grow. Hello? I am repeating it. The key to bright future is not just the knowledge, but the constant pursuit of learning. Never stop asking questions and challenging yourself to grow. So you grow to the limit of the sky. Look. Almighty God is watching. The more you get in return. So strive and never be tired in your life. Do not say, I give up. Okay? Continue. Now, it's time to acknowledge our love, our duty towards our nation. So I invite Ulka to lead us in the pledge. I request all of you to stand and extend your right hand and repeat the pledge after Ulka. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I'm proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity. Alone lies my happiness. Thank you. Boys and girls, can you keep standing while I invite Ujjwala, again a very dear, everybody is dear, to read the preamble of the Constitution of India. I'm sure you boys and girls know what the Constitution is, but it is always nice to go through it all over again. Ujjwala, please go ahead. Everyone, I'll be reading the preamble of the Constitution. Okay. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality,
equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Thank you. जोर से दमदार गुड मॉर्निंग. You know, first time I've been the principal now for 20 years. I'm getting emotional. मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है. It is really we are overwhelmed today with so much of love. Come back here. मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ. मैं वहाँ से यहाँ तक 50 साल के बाद आई. मैं कभी भी स्टेज पे I was never given, I was a very average student. मैं सिर्फ खेलती थी. And everybody used to know me as a badminton player. I was a star for every school. आपको मैं बताती हूँ. That time, the celebrity was of course then also Prakash Padukone. But now of course you know him as Deepika Padukone's father. And I was his mixed double partner at that time. I played open with him. And I was known as only a badminton player in the school. My father was in the army, so I got opportunity to play in the club. But क्या होता है हर जिंदगी में हम लोगों को आगे बढ़ना होता है. And we give exams. How many of you give exams? All of you give exams, right? और एग्जाम्स में हम बहुत तैयारी करके जाते हैं, बहुत पढ़ाई करके जाते हैं. But what happens if the out of syllabus question comes? When out of syllabus question comes, what happens? सब हाथ में पसीने, पेट में गुड़गुड़, and then we are not able to think properly. और आसपास सब कहते हैं यार क्या बेकार, सब कुछ बेकार, everything looks dejected. So out of the syllabus question अगर एग्जाम में आ जाए तो थोड़े से नंबर जाते हैं. बट अगर जिंदगी में आपके out of the syllabus question आते हैं, then you have to beat that. There will be, life is never a straight line. You will always get out of syllabus questions in life. Life throws all these questions at you. And you have to prepare. You can't give up. You have to keep on moving. So आज मैं आपको एक छोटी सी, बहुत छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ. I was told that आपको जल्दी स्टोरी बतानी है. तो छोटी सी स्टोरी में I will try to see what kind of a values that you can get. एक छोटी स्टोरी है जिसको मैं बहुत बिलीव करती हूँ and I call it as my frog story. And so what happens is there are a lot of frogs. आजकल कितने competition होते हैं ना. आजकल ये innovate होता है. I know different things get innovated. So we had a very interesting competition. That of competition between frogs. And there was a pole. Quite a long height pole, and उसमें सब frogs को बोला गया चढ़ो, और जो सबसे ऊपर चढ़ेगा that frog will be a winner. So small frog climbing the pole. Can you imagine? Can you visualize? How many of you can visualize small frogs? तो क्या होता होगा, बहुत सारे frogs चढ़ रहे हैं ऊपर, तो क्या होता है, थोड़ा सा चढ़ेंगे फिर गिर जाते थे, थोड़ा सा चढ़ते थे फिर गिर जाते थे, थोड़ा सा चढ़ते थे फिर गिर जाते थे. So all those people who were sitting and watching the competition, they would say,
what kind of a competition, what small little frogs, ऐसे भी कोई इतने competition रखता है, इतने छोटे छोटे frogs हैं, इतने छोटे छोटे, you know, how can they do it? It is impossible for them to climb. सब लोग जो organizers होते हैं उनको सब लोग they all tell them wrong things कि कैसे ऐसे कोई competition थोड़ी ना रखता है, and they tell the frogs keep it up, keep it up, keep it up. But वो बेचारा, वो गिर गया बेचारा, वो भी गिर गया बेचारा. They have all those kind of talks going on, and then says, poor things, they cannot climb. It's so impossible to climb. What kind of a game is this? However, what happens? So slowly and slowly, all frogs keep falling down. But there were two frogs who kept moving up, and there were a lot of negatives being spoken, shouting being done, बिचारे ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे, but they kept moving up and they climbed the top of the pole. So everybody was like wow, and everybody clapped for them. You also clap for them? But now I have a question for you. Let me see who can answer this question. What do you think is what you have learned, and who are those two frogs? मेरे फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं? बुड्ढा होगा तू, मैं नहीं हूं, ये कहना चाह रही है वो. तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये कौन आ गए, कहां से आ गए और किस लिए आ गए. इसका विवरण, इसका एक्सप्लेनेशन, इसके पीछे महत्वाकांक्षा, इसके पीछे जो सोच और ये क्यों हो रहा है, उसको मैं बुलाना चाहता हूं, वो शख्स को जिसने इसको इंजीनियर किया पूरा. और कैन आई इनवाइट रवि नाउ to give an introductory speech. Boys and girls and friends, give him a big hand. I have to say something about you, Ravi. Please stand here. Just stand next to me, yaar, bhai. Friends, those who don't know me and a few who know me, I'm Captain Piyush Sinha. I'm from the Merchant Navy, and I captained ships for over 20 years. Okay? But, Ravi captained this batch better than me. Ravi, stage is all yours. Thank you, Piyush and Asmat. Sisters who have dedicated their whole life for the noble profession of teaching and molding the young boys and girls like you and all of us. I am still young, all of us are still young. Sister Nora, Sister Fatima, Sister Cynthia, all the sisters who are present here, my teachers. I am very fortunate to have three teachers here. Sister Fatima is there, Dost Mohammed sir and Desai sir. All the teachers here, my friends, my colleagues, my batchmates from 1975, and boys and girls, good morning. Thank you. You see that we are like your grandfather, grandmother, we are grandparents. You have your grandparents at home. You are just like our grandchildren. But today, I am letting my emotions go wild, and I am back to my school days when we were just young like you. You may see us as senior citizens, but at heart and inside we are still young, and we are feeling that we are very young. It is what the school has done for us is what we are standing before you. There are so many of our batchmates, of all
their own lives and on all their careers. One is a captain, one is a businessman, one is internationally famous, a businessman. Then we have doctors, we have so many other learned people amongst us. You have teachers, you have seen headmistresses. Who has made all these things? I am a CA. Who has made all these things? The foundation, the seed of inception comes from the noble work done by my teachers, by the school. And that is where we have grown into such giants. I would say giants because everyone here is a giant in his own way. Today is one day where we would like to also remember who could not be present amongst us. We have mates who have gone to a better world. They have been departed and they are no more with us. The relatives, the wives, the husbands, the mothers are here. I would also welcome them and thank them to be part of our celebrations. And believe me, boys and girls, this is not a celebration, but it is a way of coming back to the school and giving back to the school what we are, what we could do in a small way. And we have done few things. As we go ahead with this assembly, you will understand what we have done. There are other batchmates, my other friends who would also be speaking. So I would not take a lot of your time, and I would thank all of you one and again for allowing me to be present here. And believe me, I am before you sheerly because of nepotism. The credit and the glory goes to one of our batchmates who was incidentally my wife and who is departed. She was a star, she was a darling of the crowd. I thank her and I remember her before I leave the podium. Thank you very much, my dear boys and girls, sisters, teachers, and my friends. Thank you. कोई पूना से आया, कोई बॉम्बे से आया, कोई बेंगलोर से आया, कोई भोपाल से आया, और हमारे पास जो है तो आउट ऑफ कंट्री भी जो है तो फिर लोग आए थे। कुछ लोग यूएस से आए, LA से आए, कैलिफोर्निया से, सैन होजे से। ये सब लोग जो है तो आज यहाँ जमा है। सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई अब अपन साथ में बैठ के सब लोगों से मिले। तो इस बात का है कि जो बहुत यंग लोग थे हमारे साथ, वो अभी साल 2 साल में गुजर गए। ये बताया हमारे पास 17 एक लोग हैं जिसका हमारे बैच में इंतकाल हो गया, और बाकी हमारे पूरी स्ट्रेंथ जो है तो 94 बैच में। और हमारे साथ जितने लोग हैं देयर ऑल शाइनिंग स्टार। आज हमारे 50 में क्या सेलिब्रेशन किया स्कूल में? आप आज हमने हमारी तरफ से एक चीज़ रखी थी कि कुछ न कुछ स्कूल को हमें देना चाहिए। स्कूल ने हमको आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ तो वी मेड अ पॉइंट टू डू समथिंग। तो हमारे पास अजय शाह करके हैं, वो जो है कभी दुबई से आए हैं। उन्होंने अपना नाम डिक्लेयर करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ। उन्होंने जनरेटर ऑल अलोन, और मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ। इनोवेशन और बास्केटबॉल ग्राउंड था, वो बास्केटबॉल ग्राउंड में हरविंदर सिंह हम दोनों मिलकर बास्केटबॉल ग्राउंड किया, और उसको जो है तो बिल्कुल ओलंपिक साइज का बनाया है। साइज अबाउट 28 मीटर बाय 15 मीटर ओलंपिक साइज। और जो यहाँ से देने का मकसद है कि इसमें यहाँ से चैंपियंस निकले। इससे पहले जो तो यहाँ से एक खुशी संजय डांगे करके हमारी यूनिक्रॉस की स्टूडेंट है। She qualified for the district level, state level, national level, and now she is the member of NBA, National Basketball Academy. And recently she has got a scholarship of $75,000, coming about 50 lakh rupees. So that should be used for 2 years, and that's got the scholarship MAMI scholarship. तो इस तरीके के बच्चे बढ़ते हैं, उनको फैसिलिटीज देना चाहिए। और आपके जो है तो अच्छे ग्राउंड उनको अगर दिया तो अट्रैक्टिव ग्राउंड दिए। ये जो चल रहा है ना आजकल 10 साल से देख रहा है, हर एक आदमी सेल फोन लेके बैठा हुआ है। ये चीज़ें खत्म होंगी, इसको भी कम करना आउटडोर एक्टिविटी।
That's the main thing of हमने काम करना चाहिए should come for the outdoor. That was the main aim to provide the सर की एजुकेशन और आज 2025 का एजुकेशन किस तरह मैं आपको एक बात बोलूँगा, शायद वी आर द ट्रेंड सेटर। 1975 में पहली बार हमारे साथ जो है तो सेट थ्री शुरू हुई थी। वी आर द पीपल हु स्टार्टेड द सेट थ्री। वो 1975 की जो है वो बैच के हमारे बैच के टाइम जो सेट थ्री स्टार्ट और फिर वो सेट थ्री अभी तक कंटिन्यू। और उसके बाद अब का एजुकेशन ऐसा है कि इट हैज बिकम टोटली एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, आप जो इजीली बुक कर ले सकते हैं, ट्यूटर्स के लिए गूगल पे बैठ के पढ़ लेते हैं। ये थोड़े से एडवांटेजेस हैं। सो वी आर नियर टू द वर्ल्ड। क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट आज के होली क्रॉस के और ऑल ओवर? हम तो एक ही मैसेज देंगे, भाई मोबाइल छोड़ दो, आउटडोर एक्टिविटीज को आओ, खेलो और फिर चैंपियन स्पोर्ट्स के तो बाकी चीज़ें भी तो हमारे साथ के जितने भी लोग हैं वो सब जो है तो स्कॉलरशिप डाल के कोई वाइस प्रिंसिपल बन गए, प्रिंसिपल बन गए, स्पेशली मोस्ट ऑफ द एकेडमिक लेवल दे आर ऑल ऑन द टॉप। मेरा नाम सुनीता वकील परीख है और मैं भी 1975 के बैच की हूँ। मुझे कुछ महीनों पहले बोला गया था कि स्कूल का रीयूनियन है तो आप ज़रूर आना। अभी मैं लॉस एंजलिस में एज अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस करती हूँ और मेडिकल स्कूल में असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर भी हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर आए और ज़रूर ये मिस ना करना, तो मैं ख़ास इस प्रोग्राम के लिए वहाँ से आई हूँ। और मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि ये स्कूल के ग्राउंड्स मेरे लिए वाकई होली ग्राउंड्स है। होली क्रॉस हैज़ बीन होली ग्राउंड्स फॉर मी। और मेरी यादें यहाँ की इतनी सारी है कि मैं उनको लिख भी नहीं सकती, लिस्ट भी नहीं कर सकती। आज मेरे लिए एक बहुत छोटा सा मोमेंट था, लेकिन मैं बच्चों के साथ बैठकर, उनके बीच में बैठकर मैंने तस्वीर खिंचाई, क्योंकि ये जो इमली का पेड़ है वो उसके नीचे बैठकर, वो चबूतरे पर बैठकर मैं अपना टिफ़िन खोल के खाना खाती थी सहेलियों के साथ। और ये मेरी सारी सहेलियां जो है, ये सारे क्लासमेट्स जो है मेरे लिए बहुत अहम जगह रखते हैं मेरे दिल में। और यहाँ की टीचर्स, सिस्टर फातिमा, ये लोग किन किन के नाम लूँ, लेकिन ये यहाँ जो दोस्त मोहम्मद सर है, सिस्टर नोरा और सिस्टर फातिमा, प्रफुल्ल देसाई एंड फिलोमीना, इनकी तो यादें इतनी सारी है मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। और ये बहुत ही खुशी का मौका है। और मेरी सारी सहेलियां मेरे बचपन से जो वो मेरे जीवन के धागों में बंधी हुई है और वो कभी नहीं टूटेगी। मैं डॉक्टर असमत हाशमी, मैं यहाँ पर स्टूडेंट थी और 36 साल यहाँ पर मैंने पढ़ाया। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐसे टीचर्स मिले। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि अभी दोस्त मोहम्मद सर जो हमारे टीचर थे, इन्होंने मुझे 8th, 9th, 10th में पढ़ाया, बीएड में पढ़ाया और एमएड में भी पढ़ाया। तो मैं बहुत आभारी हूँ इनके। मैं डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान, रिटायर्ड प्रिंसिपल मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं यहाँ पर होली क्रॉस इंग्लिश स्कूल में 71-72 में टीचर था और मैं टीचर्स का टीचर हूँ। यहाँ जो टीचर्स है वो मेरे सब स्टूडेंट्स हैं और मेरे लिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं यहाँ 75 बैच के, वो सब 65 अबव है और मैं 78 हूँ। तो मेरे लिए इतनी खुशनसीबी है बहुत कि मैं यहाँ पर आया हूँ और इस एज में कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं यहाँ के जो हेडमिस्ट्रेस थी, जो सिस्टर यूजिन, उनका मैं बहुत आभारी, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। वो और मैं क्लासमेट थे मेट के। और ये जो असमत है, ये मेरी 2 वक्त स्टूडेंट रही, एक तो यहाँ पर होली क्रॉस में और एक मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बीएड और एमए में। ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई कि मुझे बुलाया गया। इससे पहले का जो बैच था 1974 का, उसमें भी आया था मैं। टोटली मैं 5 बार आया यहाँ पर। इस जो गोल्डन जुबली था होली क्रॉस का, उस ईयर में भी मुझे बुलाया गया था। मेरे एक दोस्त थे अठौले सर, यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे लाया। और मेरा छोटा भाई था नियाज मोहम्मद खान, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट था, जो एजुकेशन ऑफिसर बना, वो इंतकाल कर गए, मेरे से 3 साल छोटे थे वो। तो इससे बढ़ के और क्या खुशी हो सकती है कि मैं इन लोगों में हूँ
और ये लोग इतने इज्जत और इतने एहतराम से हमको बुलाते हैं कि शायद ही कोई इतना इज्जत और एहतराम देगा। शुक्रिया सर एक सवाल ले लेते हैं सर। पहले के एजुकेशन में, तालीम में, कल्चर में, रांची कल्चर में बहुत कैसा बड़ा देखते हैं आप? बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले जो है, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स थे वो अपने माँ बाप की और अपने टीचर्स की और अपने जो रिश्तेदार थे उनकी इज्जत करते थे। अब ये किस्सा ख़त्म हो गया है। अब वो हार्डली दे बॉदर टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, देयर पेरेंट्स, और किसी की भी परवाह नहीं करते वो। और इस वास्ते जो वैल्यूज़ हुए हैं, एजुकेशन के जो वैल्यूज़ हैं वो टोटली बदल गए। अब वो वैल्यूज़ नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज देखिए गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। बहुत सा स्क्रीन के आपने पूरा कार्यक्रम को देखा है। हम चौथे स्तंभ के सिपाही हैं और कहने की अच्छी बात को हाईलाइट करना, एक अच्छा संदेश पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। देखिए आज की जो युवा पीढ़ी है, जो स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, इनके चेहरे को गौर से देखिए। ये स्टूडेंट्स हैं आज जिन्होंने अपने स्कूल के दिनों को याद को ताज़ा किया है। अपने वो टीचर्स जिनकी छड़ी से, जिनके प्यार से, जिनकी डांट से इन तमाम लोगों ने ऊंचाई को छुआ है, उनके एहसान को माना है, उनको धन्यवाद किया है। आज के तमाम विद्यार्थी, तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि इनसे प्रेरणा लें। ये वो चेहरे हैं, ये हमारे कहते हैं ना भारत रत्न, ये तमाम एक एक फर्द यहाँ पर कहने के भारत रत्न से कम नहीं है। इन्होंने एक ऐसी प्रेरणा दी है और तमाम जो दुनिया से गए हैं टीचर्स, उनके दोस्त, सबको याद किया है। कहने का मतलब ये है कि तमाम बातों में एक एकता का संदेश है, एक प्रेरणा है। हमारा जो है तो एक सभ्यता है, हमारा कल्चर है, हमारा प्यार है, और इसीलिए कहते हैं कि मेरा देश महान है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। I finished my education from the school in 1975, and after 50 years coming back to the school with a lot of old memories, meeting all the batchmates. The biggest happiness was to meet all the batchmates and see the school has progressed a lot, and we wish them all the best for the future also. And we keep on supporting the school in their needs if and when possible. Thank you. अभी कहाँ सेटल हो? I left India in 1980 for Africa, East Africa. I've been in Kenya for last 44 years. Moved to Dubai in 2001. My home is in Dubai and Kenya, both the places. Heart is in Aurangabad. Heart is worthy enough to stand above you. Again, that's the reason I just came here to you. A very good morning to you, sisters, my dear teachers, the non-teaching staff, my very dear children, and my radiant when I look at your faces. A very good morning to you. I have not prepared a speech.
Dr. Piyush had asked me, you've got to give an address to your audience. I said, no. But I just want to speak my heart out. I was introduced to batch 1975 long ago when Asmat and myself used to be seated across the table in the staff room. Asmat used to talk about you a lot. That's when I was introduced to your generosity, to your kindness, to your humaneness. Because I think there were some of your batchmates who were struggling, who had a little difficulties in their lives, and that's when the whole group would come together, help people out, your batchmates. And that is what Asmat used to keep sharing with me about you. And very recently, that is maybe a year ago, I got to know some of you more closely when you just walked in the office requesting permission for this day. And then on, we have journeyed together, sir. And over this last 2-3 months, I think we have been very, very closely working together, having you here on the school campus practically every day. I had a group of you who came in and said you all wanted to celebrate this day. And I said, oh, a year ahead, that's going to take time. We can talk about it later. But no, you wouldn't leave me at that. You said, no, sister, please tell us when. I said, okay, maybe we'll talk about it a little later in the month of October, November. They said, no, we're coming across from the world over and we need to book tickets and apply for leave and all sorts of things. Finally, we came down and zeroed on the 1st of February. That's today. While we were also talking, your batchmates, the group that was in charge, they asked me, sister, what do you want for the school? I couldn't think of it at that moment. The only thought that I had was the basketball court, which is what I had on my mind, to gift a basketball court well furnished for my children. And we sought for quotations, and the quotations were quite a little beyond our budget. And that's when I had just kept the quotations aside. So I spoke to them. I said, you know, what's on my mind is the basketball court for my children. They did not even listen to it or pay heed to it. So I said, okay, maybe the budget is too much, because I already spoke to them about the budget. A little later, I had a question that was asked to me, what about the solar panels for the electricity? And that's when I felt you were also so concerned about the environment. I said, yeah, we do have the solar panels. The next thing that came was, what about a generator? My heart actually skipped up, thinking that a generator, and you are going to gift us a generator. That was the thought. I said, no, it's too expensive and surely not that I can ask of you to give us a generator. No. And that was it. Days went, months went, and suddenly in the month of December, I have again the group that came in, and we were having the rehearsal in the auditorium for the annual day, saying that just let us know where the place is where you want the generator to be fixed. I was like, are you sure? I need to take permissions from my authorities, the manager. I have not even spoken to Sister Nora about it. And they said, no, just let us know. And that's when I requested Sir Hafiz to please take charge of the thing. And we had Sir Hafiz, who has been coordinating with the group, along with some of our non-teaching staff, Mr. Pradeep, and A few weeks ago, a pickup came in. Come. I said, paint? We have not ordered for any paint, and we're not looking forward to paint anything on campus. Maybe I thought something either in the ashram or for the primary. They said, no, it's for the high school. I went out to see, and there was this delivery challan. Paint coming from Bangalore, the painting of the basketball court. I couldn't believe it. I'm very, very, very grateful to you, Batch 1975, for your generous contributions. These are two huge projects that you have taken up. My children will benefit from this. Not only my present children, but the batches yet to come. We have installed interactive panels. And when the lights go off, the teachers cannot use the interactive panels in the classroom. And this is such a thoughtful gesture. Very, very grateful to you. May God bless your generosity. That's about the contribution that you have made. But what I want to talk about is something very, very different. I want to thank you for your gracious generosity. When I talk about generosity, I think my hand is shaking.
That's where I need to support myself. When I talk about the gracious generosity, I'm not talking about the two things that you have given to us. Yes, of course, I'm very grateful. But I'm so grateful to you for your giving nature. You've been just giving and giving and giving and giving of yourself. We had a team, I think maybe of 6, 7 of you working together. I'm strictly warned not to take any names. And I think I'm not supposed to be taking names. But I want to thank you profusely, because each day the way you have worked at it with such diligence, such professionalism, such commitment is beyond my understanding. You know, I just want to say, in today's world, each of us are so busy with our own affairs. But when I look at you, you have kept everything aside. You have devoted your time to your school. Grateful to you, a lesson learned. And I want my children to learn the same lessons, to give back to society, whatever the society gives you. I have experienced your humility and simplicity. You have your offices, as we just said, each of you is a giant in your own field. Each of you is a luminary in your own field. You've got your offices, you've got your places. But when you would come here on campus to supervise the work, you would be sitting under the trees, on the stones, walking around in the hot sun without even a sip of water. I've learned simplicity and humility from you. Been here right from 11, sometimes 10 o'clock, sometimes 9 o'clock in the morning, till evening 6 without even food. Grateful to you. And all this is done for the sake of your school, your children. This is called altruistic behavior, complete altruism. Thinking not of yourself, but of the others. Grateful to you. The only way I can repay, I don't think we are able to repay the generosity and the kindness that you have shown towards us, but the only thing I can say and do is pray to God Almighty that the Lord may bless each one of you, your families, and all that you are concerned with. Above all, I pray to God that the Lord may bless you with good health, which is so very important today, well-being, peace of mind, and all the inner securities, the joys, and all the blessings that the Lord above can bless you with. God bless you, and we will ever remain grateful to you. So many grateful. Thank you, sister. We are really touched by the words which came from the bottom of your heart. Your blessings will always be there for us. This is what we need, your blessings. And we are with you, with the school, with the children. Call us anytime. And उल्का को देसाई सर जहाँ हैं उनको वहीं पे आप फेलिसिटेट करें और उनके लिए कुछ हम लाए हैं। जो आप आज हैं, जो हम हैं, हम इनके ऋणी हैं और only way to say is a simple thank you and nothing else. सिकंदर and हरविंदर, मैं अब एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जो उन्होंने पढ़ाया तो अपनी जगह पे है, लेकिन पता नहीं कितने कलाओं में वो
अचीवर है, लिखते हैं, गाते हैं, बोलते हैं और कभी आप इनसे फुर्सत में मिलिए तो ये महफिल भी जमा देते हैं। दोस्त मोहम्मद सर को सिकंदर और हरविंदर के लिए प्लीज गेटिंग ऑन द शेर यूं है, न समझा उम्र गुजरी, न समझा उम्र गुजरी उस बुते काफिर को समझाते, न समझा उम्र गुजरी उस बुते काफिर को समझाते, पिघल कर मोम हो जाता अगर पत्थर को समझाते। क्या बात है सर। देखिए मैंने कहा आपको कि इनका अंदाज जो है ना बहुत निराला है। अब मैं सीमा और फिरासत को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिस्टर फातिमा को जहां वो हैं वहीं वेलकम करें। सिस्टर वुड यू बी कंफर्टेबल टू कम अप? A word of thanks to each one of you. It has given me great joy to be present today. I express my thanks to Miss Asmat for having contacted me on behalf of all of you. And I cannot forget my dear sister Eugene, who has welcomed me in the year 1971 on the 6th of January. I was just professed, I had become a sister, and I was transferred to Aurangabad to Holy Cross English High School. I was then only 21 years old. But then my gratitude to Sister Eugene still lasts till today. God grant her eternal rest, and I wish you all the best. Thank you. हमने थैंक यू बोला, लेकिन फसी, वेयर आर यू? आई नीड योर हेल्प हियर. थैंक्स फसी. आप जो उस तरफ प्लाक देख रहे हैं, सिस्टर ने जिनका नाम लिया है उनकी फोटो बीच में लगी है. हम सब फसी खमक, हम सब सिस्टर यूजीन को याद करते हैं और काफी सारे टीचर्स को याद करते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, और जैसे रवि ने कहा था कि दे हैव गॉन टू अ बेटर वर्ल्ड. और इसमें एक चीज जो अभी रवि ने कही, मेरी और रवि की एक कॉमन प्रॉब्लम थी. हम लोग क्लास में 4th, 5th या 6th रैंक आता था, और पहले 3 में से हमारे
fierce competitors यहाँ हैं, एक वहाँ है, एक ऊपर चली गई है. तो it is a very nostalgic moment that the girls always beat the boys. So ladkiya, you be very assured that you'll beat all your classmates when you get a rank. And we always wanted to be the first, second and third, but normally Ravi मेरा 4th, 5th, 6th तक rank आता था. First, second, third के rank जो है decided ही होते थे. We had conceded to the girls. Anyway, that क्योंकि Ravi brought up something, मुझे कुछ याद आ गया. अब मैं जो हमारे टीचर्स आए हैं यहाँ पर, मैं उनको ऑनर करना चाहता हूँ on behalf of our friends, the batch of 1975. And first, I would, shall we do it on the stage or we'll do it down? Sister Bora, would you come up? Yeah, okay. Geeta and Sikandar, can you escort Sister Nora on the dais? And Vasu, can you come here? Can I request Vasu and Shushma to escort Sister Cynthia on the dais, please? This is a little surprise for Cynthia, ma'am. This is the news item that featured on the Daily on the 1st of February 1975. 1st of February 1975. This was the front page of the local daily. To read the list of the departed souls of our batchmates. उजाले अपने यादों की हमारे साथ रहने दो. उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो. न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए. सो शुभराम. Few of our friends have left us, of course, to go to a better place, but we remember them today. They are Anwar Parvez, Ghulam Qureshi, Javed Syed, Maninder Singh, Nazifa Maghrabi, Usman Siddiqui,
Prakash Burewar, Sanjeev Devalwar, Sheikh Azimuddin, Smita Verma, Stephen Sangle, Shri